Let's go. Uh, Let me see if you can hear me. Okay. Alright, guys, let's start with today's lecture. So, today we will directly basically start with inheritance. So, inheritance is something that we have created, but we will start it from scratch or so, like completely from scratch. But it will be in a little bit a speeder way. Okay, so we already know there are four types of types of inheritance, right? Four types of inheritance that we already know. So what are those types? So first is simple inheritance. So, yes, so I think this is fine. First is simple inheritance, right? First is simple inheritance. इसका एस भी हम बड़ा कर देंगे. Then there is this. The second is, I think, multiple, right? Multiple inheritance. Then there is this third, that is multi-level inheritance. And the last is hybrid or inheritance. Okay, so let's try to understand this one. So simple inheritance क्या कहता है? What the simple inheritance has to say? Inheritance has to say is, let me again record this also. So simple inheritance is कि there is a class, right? There is a class that can be a parent or any class, right? So वो parent class के अंदर जो भी function रहेगा या फिर let's create a function only, function my quality. Okay, my quality, और इसके अंदर हमने self डाल दिया. And if I say my qualities are print I am a painter, ठीक है, तो parent is a painter. And then we see there is another class which is a child class, right? A child class which has a quality of this parent. ठीक है, तो parent का spelling गलत हो जाए. Parent child. Okay, so now this child has the property of this parent, and if we create some his quality, like child quality, and if we pass again self, इसको हमें आगे कुछ करना होगा. if we say child quality and child says child के अंदर है he is a or I am a dancer, right? So now in this scenario what happens is कि this is a simple inheritance. क्या बोलेगा कि जो भी आपके पेरेंट के पास क्वालिटीज़ थी वो चाइल्ड में आ जाएगी, राइट? एंड पेरेंट के पास वो क्वालिटीज़ नहीं रहेगी जो चाइल्ड के पास रह सकती है गोइंग है, ठीक है? सो इफ़ आई क्रिएट अ लेट्स से p इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर मैं पेरेंट क्लास स्टोर कर देता हूँ. एंड इफ़ आई से p डॉट माई क्वालिटीज़,
So basically I will get this I am painter, right? This one. And similarly if I say child equals to C एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, उसके अंदर आई विल स्टोर दिस चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास में स्टोर कर दूंगा. एंड आई विल से कि सी डॉट माई चाइल्ड क्वालिटी मैंने अगर कह दी, तो ये देखो ये कोड इंटरप्रेटर इटसेल्फ आपको बता देगा कि कौन से ये क्लास आप एक्सेस कर सकते हो. एक तो चाइल्ड क्वालिटी जो खुद चाइल्ड का है, एंड एक माई क्वालिटी जो कि पेरेंट का है, राइट, विच इज़ फ्रॉम पेरेंट. सो यू कैन एक्सेस दीज इंफॉर्मेशन. सो इफ आई रन दिस वन अगेन, सो आई विल गेट ओके आई एम अ आंसर द ये चाइल्ड वाला, ठीक है. एंड नाउ इफ आई से my colleagues is also, which is the class which is from the parent one. This is also similar, like child can child can access that too, ठीक है, child can access that too, ठीक है. So कुछ इस तरीके से there are two things. तो parent can only be a painter, but a child can be a dancer also and a painter also. Okay, is this clear? Is this clear? Like simple inheritance तो हमें सबको आना चाहिए. If this is clear, you know what you need to do. Type yes in the comments guys. If simple inheritance, at least simple inheritance हमें समझ में आया है, type yes in the comments. Yes. Okay, cool. So now let's move on to the new, or I would say एक full fledged example ले लेते हैं. And we can, I think this was the full fledged example, but let me just create one more example जिसके अंदर if we can say init function भी use करते हैं, right? init function भी अगर हम use करते हैं तो again there is a class which parent नाम से ही ले लेते हैं, right? So if we create a class parent नाम से हमने create कर लिया है, and inside this we have created this init constructor, ठीक है, init constructor. एंड ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, लेट्स से सेल्फ एंड अ नेम ऑफ अ पैरेंट, ठीक है, नेम ऑफ अ पैरेंट. सो वेन एवर वॉट एवर द पैरामीटर you pass here, it is you need to create a instance, right, instance variable of that you know what we called parameter. So अगर ये name है तो मैं self dot name equals to name कर दूंगा. अगर ये एज है, सो आई विल अगेन क्रिएट व्हाट सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है. कुछ इस तरीके से हमें जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इनिट कंस्ट्रक्टर क्लास, दैट वी हैव टू create. And you can see I will just add a print statement inside this. initialize, okay, let's initialize करते हैं, ठीक है. So initializing means, so whenever you run this parent class, ये अपने आप चल जाएगा, unlike the other methods जिनको बुलाना पड़ता है, जैसे आप ये देखते हैं. Let me just create one more method जिसका नाम है parent parent details. ओके, parent detail नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर दिया. सो इसके अंदर का इफ़ आई वांट टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास, right, if I want to access any information of this class, I have to call this function, right? So let me just say print my information, right, print my information. And if I say self dot, यहाँ पर मैं f string यूज़ कर लेता हूँ. if I say self dot name, so self dot name
and okay, my name is and my age is, what is my age? Self dot age. So what I have done here is I have taken these references, self dot name, self dot age. Now whatever value I will pass in the parent, I will get these values here, name and age. ठीक है. So if I now simply, अगर मैं इसके आगे नहीं जाते हुए I say p equals to object. ठीक है. p is equals to object और उसमें मैंने parent को स्टोर कर दिया. ठीक है, parent को स्टोर कर दिया. Now I have to pass these two variables in the parent itself. So parent को मैंने कर दिया सुरेश. ठीक है, and comma age मैंने डाल दिया 62. ठीक है, age is 62. So if I say p dot now p dot parent details. ठीक है, p dot parent details. So हमें ये डिटेल्स मिल जाएगी, this and this डिटेल्स मिल जाएगी. But since we are initializing this parent class itself, this init function will automatically will be called, right? Init function will automatically will be called. How? Because this is with this, like we have to manually call this, right? p dot parent details हमने manually call करा है. So let's try to see if this works. So देखिए, initialize has automatically ran. ठीक है, ये automatically चल गया. Whereas this my name is Suresh and my age is 62, इसको हमें मैनुअली बुलाना पड़ा. ठीक है, मैनुअली कॉल करना पड़ा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ देयर. ठीक है. सो नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास, दैट इज़ चाइल्ड क्लास. ठीक है, चाइल्ड क्लास, एंड इसके अंदर हम डाल देंगे पेरेंट क्लास को. ठीक है, पेरेंट क्लास को हमने डाल दिया. नाउ लेट्स सी डायरेक्टली इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं. लेट्स से फंक्शन नेम इज चाइल्ड नेम. ठीक है, चाइल्ड नेम के अंदर हम सेल्फ डाल देंगे एंड वी विल सिंपली से प्रिंट माय पेरेंट नेम इज सेल्फ डॉट नेम. ठीक है, सेल्फ डॉट नेम. सो what will happen here? Self dot name, ये नेम रहेगा, this name. ठीक है, because this can access all this information. So let's try to see. Now I will create C नाम से या फिर kid नाम से. Yeah, I can create like this, kid equals to child class. ठीक है, चाइल्ड क्लास में आई डोंट हैव टू पास एनीथिंग. ठीक है, although I think I can pass, okay, I can pass name and age also. ठीक है, हम नेम एंड एज भी पास कर सकते हैं पेरेंट की तरह, और वी कैन कीप इट एम्प्टी एज वेल. ठीक है, वी कैन कीप इट एम्प्टी एज वेल. एंड इफ आई से किड डॉट चाइल्ड नेम, सो लेट्स सी दिस टेक्स एनीथिंग. और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट जो इसको सेपरेट करेगा. So this has been separated. So let's see whether this works. Okay, यहाँ पर we have to pass the parameters since there is a parent in it. ठीक है, so parent का नाम था सुरेश. ठीक है, and उनका एज था 62. ठीक है, उनका एज था 62. I will run. So okay, so this is also another discovery, right? Like if we use child function and parent, so we have to pass these arguments also. ठीक है, name and age. So यहाँ पर आप देख सकते हो initialize has been automatically चल गया ये. Although we were calling, क्या कॉल कर रहे थे हम? चाइल्ड कॉल कर रहे थे. चाइल्ड में भी इनिशियलाइज चल गया एंड माई पेरेंट नेम इज़ सुरेश. ठीक है, माई पेरेंट नेम इज़ सुरेश. तो इस तरीके से इन दिस वे यू हैव access the child class. ठीक है, child class, and now you can also access kids dot parent details, right? You can also access this particular method also. So if I run this one, and if you see, you can also access this my name is Suresh
and my age is 62. This one, my name is self dot name and my age is self dot age. Okay, any confusions here? If this is simple and like, पूरा clear है तो let's type clear and let's move on to next, right? Let's move on to next. एक ही clear है, other people. So today I am using inheritance, sorry, the Google Colab. Okay, so this is a simple, I have also told you to use this. So very browser based, very lightweight. You just have to connect it here. You can also use AI functions here as well. Just have to go to the settings, जब आएगा then AI assistant बोल लो, show AI inline consent to use AI features, ले ले भाई consent. So you have to just continue and close.